Hello and a very warm welcome. Thanks for tuning in to News 9 Live. I'm Kabir Naqvi and you're watching this special broadcast right here from a studio in the National Capital Region, where we're going to be bringing you some of the top stories that are essentially dictating the pulse of the day, stories that you might have missed out on during the course of the day, and stories that are certainly trending right now at 6 p.m, ladies and gentlemen. All right, let's shift our focus to the stories at hand. First up, we're going to talk about what's happening in Punjab. Because today, the Punjab police arrested Congress MLA Sukhpal Khira for his alleged involvement in a case of drug smuggling and money laundering. Now, the arrest followed an early morning raid at Khira's house in Chandigarh in connection with an old case that was registered back in 2015 under the Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Act, the NDPS Act. Now, Khira has been accused of supporting an international racket of smugglers and receiving financial benefits in return. As per the charge sheet, Khira used these funds to purchase properties whose value exceeds his declared income. The video of the arrest went viral on social media. You're looking at those shots as well, as Khira's son went live on Facebook as the raids were being carried out. Khira could be seen arguing with the police officials, inquiring about the reason for his arrest and also asking for a warrant. ਸਾਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਵਾਰੰਟ ਦਿਖਾਓ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੱਲੇ Well, if that wasn't all, Khira could also be heard raising slogans of Punjab Sarkar Murdabad. Murdabad! Sharabi! Murdabad! Well, now, even as this entire episode took place, Sukhpal Khira has been sent into police custody till the 30th of September. Khira, however, has asserted that he has been arrested in a false case which has already been quashed by the Supreme Court. He has also accused the Aam Aadmi Party government of taking the state into a situation of Jungle Raj. ऐसा है, ये प्योर बदलाखोरी है। पंजाब में भगवंत मान हमारी ऑपोजिशन को जर नहीं पा रहे। एक तरफ केजरीवाल और भगवंत मान इंडिया अलायंस के अंदर घुसने के लिए हमारी दिल्ली की लीडरशिप के ऊपर बहुत दबाव डालते हैं, और यहाँ पंजाब में कांग्रेस को मार्जिनलाइज करने के लिए, आवाज़ बंद करने के लिए ऐसी गंदी हरकत की है आज। जो ये बोलते थे ना कि बदलाव की राजनीति कर रही है, बदलाव नहीं है, ये बदला है। इस केस, ये पुराना केस है 2015 का, FIR नंबर 35 NDPS की है, बड़ा सीरियस केस है। और इस केस में 8-9 साल के बाद मेरे को आज नामजद कर दिया, जबकि इसी केस को लेकर के जब मेरे को कोर्ट ने तलब किया था 2017 में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हैज रूल्ड इन माय फेवर कि ये जो समनिंग है फाजिलका की कोर्ट को, FIR नंबर 35 जिसमें आप मेरे को अरेस्ट कर रहे हैं, इसकी समनिंग क्वॉश की हुई है सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके आधार के ऊपर हम हाई कोर्ट पहुंचे हैं। हाई कोर्ट ने सारी FIR की प्रोसीडिंग्स को, PMLA ED की प्रोसीडिंग्स को क्वॉश के लिए 6 अक्टूबर हाई कोर्ट में डेट रखी हुई है, और यही FIR को ED ने उठाया 2021 में, यही FIR, क्योंकि वो शेड्यूल्ड ऑफेंस उठाते हैं। इसी FIR में मेरे को अरेस्ट किया, इसी FIR में मेरे को 80 दिन पटियाला जेल में रखा, इसी FIR में मेरे को हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब ने डिटेल्ड ऑर्डर रेगुलर बेल दी। तो क्या आप एक ऑफेंस को लेकर के दोबारा अटैक करेंगे अपने विरोधियों के ऊपर? ये भगवंत मान, अमन अरोड़ा, कुलतार संधवा, इस FIR के जब मैंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जो राणे गुरजीत को वहां से निकलवाया था कैबिनेट से, रेत माफिया मिनिस्टर को, ये मेरे साथ बैठते थे ये लोग कि हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन के खिलाफ FIR 30 में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, और अब उसी FIR को उठा करके मेरे खिलाफ यूज कर रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे रूल में फेवर किया। ईडी के केस में मेरे को रेगुलर बेल मिली है,
ये तो भगवंत मान जैसे खून का प्यासा है. एंड लेट मी टेल यू, यू आर द रिस्पॉन्सिबल मीडिया हियर. I will not be surprised if he gets me physically eliminated also. I am fully, let me tell you, because जिस तरह का ये खून का प्यासा हो गया झूठे केसों के ऊपर दोबारा ये चौथा केस है मेरे खिलाफ भगवंत मान की तरफ से. पंजाब के सीएम भगवंत मान का शराबी चेहरा और उनकी पार्टी को बेनकाब किया सुखपाल सिंह खैरा ने. पंजाब में किसी के साथ भी कभी कोई धक्का होया या सरकारी जैसे आज हमारे साथ हुआ है या किसी ड्रग्स ओवरडोज करके किसी की डेथ हुई तो सुखपाल सिंह खैरा ने वहां पे जाके उनका साथ दिया, उनका समर्थन किया. यस करेक्ट. एक एनआरआई दी कोठी दा जब कब्जा हुआ, आप सब जानते हैं उन्होंने कैसे एक एनआरआई परिवार को उनका हक दिलाया. जब पंजाब में रह के आप पंजाबियत और सिखों की बात करोगे, सरकारों के खिलाफ बोलोगे तो उसका ये सरकार आपको मेडल देती है. मैं पर्चा नहीं मानता. ये पिछले 5 सालों में मेरे फादर की दूसरी अरेस्ट है. तो ये सच बोलने का नतीजा है. कौन सा मामला है जिसमें बताया जा रहा है कि अरेस्ट किया गया है उनको? ये एक 2015 की पुरानी एफआईआर को इस्तेमाल किया गया है. उसी एफआईआर में हमें कोर्ट ने हमें समन किया था. सुप्रीम कोर्ट में हमने उस ऑर्डर को चैलेंज किया. सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को क्वॉश किया. आज किसी ने मेरे को बताया कि जी गुरदेव सिंह की स्टेटमेंट, गुरदेव सिंह को तो अरेस्ट हुए 8 साल हो गए. 10 साल की सजा, 20 साल की सजा में से वो 8 साल काट चुका है. उसका बयान 2015 में लिया गया और उसके बयान को चलते आज 2018 में अरेस्ट किया गया. बड़ी हैरानी वाली बात है. जो कानून है वो सबके लिए बराबर है. पहले हम रिमांड डिपोज करेंगे, उसके बाद रेगुलर बेल में जाएंगे और उसके बाद जब हमें हाईकोर्ट जहां तक जाना लड़ना पाया हम लड़ाई लड़ेंगे. इनको अगर लगता है कि हमें हमारे खिलाफ पर्चा दर्ज करा के हमें डरा के धमका के बिठाया जा सकता है तो वो गलत है. वो सुखपाल खैरा को जानते नहीं. Well, now, needless to say, the arrest has led to a political fight erupting between the Congress party and the Aam Aadmi party. The Punjab Congress has hit out at the Aam Aadmi party government, accusing it of indulging in political vendetta. Congress State Unit Chief Amrinder Singh Raja Waring and leader of opposition Pratap Singh Bajwa have come out in support of Khair and have condemned the arrest. Waring visited Khaira's residence and met his son Mehtab and other family members as well. Listen into what they had to say. खैरा साहब 78 दिन अंदर लगा कर आए और माइंड उनका क्लियर है कि हमने जब कोई गुनाह ही नहीं किया तो हमारे ऊपर किसी प्रकार का कुछ हो नहीं सकता. हाँ, ये जो वेंडेटा पॉलिटिक्स है, कुछ दिनों की परेशानी है, वो तो रहेगी, लेकिन अल्टीमेटली फैमिली को भी पता है और जनता को भी पता है कि खैरा साहब इसमें पाक साफ होकर बाहर निकलेंगे. और जो इसका केस है मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि व्हाट इज दिस केस. मार्च 2015 में एफआईआर नंबर 35 पीएस सदर जलालाबाद एनडीपीएस एक्ट अगेंस्ट 10 लोगों के खिलाफ हुई थी. ये 10 लोगों के खिलाफ 2015 में एक एफआईआर हुई थी, एफआईआर नंबर 35. उसमें खैरा साहब का कहीं पर नाम नहीं था. आज सवेरे एक बहुत ही मैं समझना निंदनयोग पंजाब पुलिस ने एक वारदात की है, कार्रवाई की है कि साडे किसान विंग दे चेयरमैन साडी पार्टी दे नेशनल सुखपाल सिंह खैरा ने साडे एमएलए नूं उन्हां दे घरों जाके सवेरे 6 बजे गिरफ्तार कर लिया. मेरे वीरों ते भराओ, सारिਆਂ ਨੂੰ अफसोस की गल यह है कि इन्हां को कोई अरेस्ट वारंट्स नहीं सी. दूसरी गल मैनू बहुत अफसोस है यूटी पुलिस उत्ते, क्योंकि यूटी जिहड़ी है इहदे उत्ते पंजाब पुलिस डायरैक्टली किसी के घर को एंटर नहीं कर सकती. जो कानून कहता है कि पहले एसएसपी चंडीगढ़ को इजाजत लेनी पैंदी है, फिर जिस सैक्टर में सुखपाल सिंह खैरा जी का घर सी उस पुलिस स्टेशन का एसएचओ नूं अरेस्ट वारंट कचहरी दे विखाने चाहिए ते फिर लोकल पुलिस नाल जाएगी, फिर ही तुसीं किसी नूं अरेस्ट कर सकते. अज पंजाब पुलिस जिहड़ी मशहूर है दुनिया भर ज्यादतियां करने वास्ते, अपने इन ह्यूमन ट्रीटमेंट वास्ते, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस वास्ते, अज उन्होंने फिर वही रंग अपना विखाया जो हर रोज पंजाबी वख-वख जिलियां दे विच वख-वख शहरां दे विच वेखदे.
ਕੋਈ ਪਿਓਰਲੀ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਚਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆ ਥੱਲੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਗਈ। Meanwhile, a delegation of the Punjab Congress is currently, in a huddle. They earlier met at the PPCC office and are going to soon hold a meeting with the Punjab governor over the arrest of Khaira. Now, the incident has once again brought out the fault lines existing in the INDIA bloc to the fore. The arrest is expected to further dent the already strained relationship between the Aam Aadmi Party and the Congress, which are, mind you, political competitors in Punjab, but have come together in the INDIA alliance for the 2024 Lok Sabha elections. Congress President Mallikarjun Kharge has said that the party will not tolerate any injustice. इसके बारे में डिटेल ले रहा हूँ, लेकिन जो भी कुछ है अन्याय अगर कोई करता है तो बहुत दिन टिकता नहीं और कोई अन्याय हमारे ऊपर करेगा तो अन्याय सहन करने वाले लोग भी हम नहीं। ये पहली बार गिरफ्तारी नहीं हो रही, ये इनके 5वें विधायक जो पूर्व मंत्री गिरफ्तार हुए, पहले के 4 मंत्री इनके गिरफ्तार हुए, इनके उप मुख्यमंत्री शायद आज भी जेल में हैं, ओपी सोनी। तो निरंतर आम आदमी पार्टी वहां कांग्रेस के जो नेता हैं उनके खिलाफ जो मुकदमे उनको निकाल कर उनको परस्यू कर रही है। अब ये तो राहुल गांधी, खड़गे साहब, सोनिया गांधी ये तय करें कि इन्होंने समझौता रखना उनके साथ या कैसा समझौता है। यहाँ पर इन्हीं के लोग अरेस्ट किए जा रहे हैं। वहां पर जो इनकी पार्टी के एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है बाजवा साहब, वो तो कह रहे हैं कि इस बार 13 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद हम सरकार बनाएंगे। 32 विधायक वो कह रहे हैं कि मेरे संपर्क में हैं। तो ये जो मुंबई के अंदर, ये जो बेंगलोर के अंदर, ये जो सिर्फ मुंह दिखाई के लिए फोटो ऑप के लिए जो काम करते हैं, उसका जमीन पर कहीं कुछ हो नहीं रहा। जमीन पर आपस में लड़ रहे हैं और ये इंडी लायंस इसी प्रकार का है कि वहां बड़े नेता फोटो खिंचवाते रहे, नीचे नेता लड़ते रहे। Well, now these were reactions coming across from stakeholders who are closer to the actual tussle. Reactions have also been coming in from other parties in Punjab as well. को गल है कि बहुत अफसोस की गल है कि सूबे दे विच वंडेटा पॉलिटिक्स तो अलावा और कोई कार्य जिहड़ा वो नहीं हो रहा और रूल ऑफ लॉ जिहड़ा वो बिल्कुल खत्म हो गया। अज जदों खैरा साहब के घर सवेरे 6 बजे पुलिस ने रेड किया तो मैनू वो दिन याद आ रहा सी जदों कांग्रेस पार्टी की सरकार सी ते सरदार बिक्रम सिंह मजीठा नूं इसे तरीके ड्रग्स के झूठे केस के फसा के ते अरेस्ट किया गया सी और 7 महीने बिना किसी कसूर दे जो संताप उन्हें जेल के हटाया वो वंडेटा पॉलिटिक्स का हिस्सा सी। उहदे परिवार दे नाल की बीती, माता पिता नाल की बीती, बच्चे नाल की बीती, असीं सारी गल दी गवाह। उदों भी असीं कहा सी कि इस पद्धर दी नीवें पद्धर दी वंडेटा पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ते अज हुण कांग्रेस पार्टी नूं सुखपाल सिंह खैरा नूं फेस करनी पै रही है कि 2015 का केस जिहदे ते समन सुप्रीम कोर्ट क्वैश कर चुकी, उहदे च 6 बजे घरों सिटिंग MLA नूं इस तरीके फड़िया जा रहा। तो तुसीं दसो आम बंदियां दा की हाल हुंदा होगा, आम लोकां नाल जिहड़ा धक्का हुंदा। All right, then let's shift our focus from Punjab. Not so much because we're again talking about Arvind Kejriwal, who is the national convener of the Aam Aadmi Party, which is the ruling party in the state of Punjab. But coming back to the national capital and this controversy around Arvind Kejriwal's official residence's renovation. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, he has responded to the preliminary probe that was initiated by the CBI into the alleged financial irregularities during the renovation of his official residence. Now, Kejriwal said that this was not the first inquiry against him and he was confident that nothing will be found against him this time as well. This inquiry is not a criminal case but marks the initial step in a potential criminal investigation. The CBI has requested all renovation related documents from the Public Works Department of the Delhi government with a submission deadline of the 3rd of October. The CBI's probe aims to determine whether there was wasteful expenditure
or financial irregularities in the repair work carried out at the Chief Minister's residence. मैं ये कोई पहली बार तो है नहीं। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं और ये उनकी घबराहट दिखाता है। ये पहली इंक्वायरी तो है नहीं, अभी तक 50 से ज़्यादा इंक्वायरी करा चुके हैं। कभी कहते हैं कि शराब घोटाला हो गया, कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बस घोटाला कर दिया, कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने स्कूल घोटाला कर दिया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने सड़कों का घोटाला कर दिया। इन्होंने 33 से ज़्यादा मेरे ऊपर केस करे और इन्होंने सारी छानबीन कर ली, सारी जांच कर ली। पिछले 8 साल से जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हूँ तब से ये जांच ही जांच किए जा रहे हैं। अभी तक तो कुछ मिला नहीं। तो अब ये नई इंक्वायरी इन्होंने शुरू की है, इस इंक्वायरी का भी स्वागत है, इसमें भी कुछ नहीं मिलने वाला। All right then, moving on to a story which of course tells us one thing for sure. All of our heads should collectively hang in shame. The harrowing incident in Ujjain in Madhya Pradesh, where a 12-year-old minor girl was discovered in a semi-naked and bleeding state after a brutal assault, has ignited nationwide outrage. However, as 72 hours have elapsed, fresh details have certainly emerged, revealing discrepancies in police statements and case records. More distressingly, the assailant remains elusive. Now, there have been no arrests in the case. An auto rickshaw driver, of course, was questioned after authorities scrutinized CCTV footage from the area where the teenager sought help in vain. Although bloodstains were found in the auto rickshaw, no conclusive evidence linking the driver to the crime has been uncovered. Police continue to question individuals and explore circumstantial evidence for vital leads. Initially, Ujjain's police chief, Sachin Sharma, suggested that the survivor couldn't recall her name and address, hinting at an origin from Prayagraj, talking about the minor girl's accent, some 850 kilometers away from Ujjain. However, the first information report, the FIR, contradicts this notion, including her name and her father's name. A senior police officer has since clarified that the girl is a resident of Madhya Pradesh district. She is a class 8 student who resides with a grandfather and elder brother. Remarkably, her family had reported her missing on Sunday, further complicating this particular case. Now, contrary to earlier reports indicating that the survivor couldn't provide any information, the accessed FIR contains her comprehensive statement detailing the horrifying ordeal that she endured. The FIR prompted the application of relevant sections of the Indian Penal Code and stringent protection from the children from sexual offences under the POCSO Act. Now, this FIR was officially registered on Monday. Recent and latest information discloses that the girl hails from a Madhya Pradesh district located over 700 kilometers from Ujjain, where she was discovered. Police Chief Sachin Sharma noted that she embarked on her journey on Sunday afternoon with a 12-hour travel time from her home district to Ujjain. The incident was reported the following morning after her arrival in Ujjain, raising significant questions about the timeline of the events. Additional CCTV footage obtained during the police investigation captures the girl walking near Ujjain while dressed in her school uniform. A set of footage timed at 3 a.m. shows her in the school attire. However, subsequent footage reveals her semi-naked and bleeding, strongly indicating that the crime did transpire early on Monday morning. Disturbing visuals depicted the girl desperately seeking assistance door to door, with some individuals turning her away as well. Police officer Sachin Sharma clarified that this narrative doesn't entirely hold true, acknowledging that certain individuals in fact did come out and provided aid, including financial support as well. Even a toll booth staff member extended assistance. While some people might have hesitated, they still offered financial help. When discovered by the authorities, the girl had 120 rupees in her possession. Her rescue was facilitated after a concerned priest from a nearby ashram alerted the police. But 72 hours later, yet no arrest in this case, only a couple of questionings. मैं तो पूछना चाहता हूं अपने भाइयों और बहनों से, समाज के भाइयों और बहनों से, कि आप लोगों को क्या हो गया? आप में दिल में कोई रहम नहीं है, आपके ममता नहीं है आपके दिल में, कि एक बच्ची जो सड़क पे चल रही है और उसके साथ ऐसा हादसा हुआ है, तो आप कोई मदद नहीं कर सकते?
हमारे समाज को क्या हो गया? इतनी घृणा, इतनी नफरत सही काम करने में। उज्जैन जिले के थाना महाकाल अंतर्गत हुए घटनाक्रम जो कि 25 तारीख को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें जैसी सूचना प्राप्त हुई थी, बच्ची का तुरंत मेडिकल कराया गया था और क्योंकि बच्ची बता पाने में सक्षम नहीं थी वो कहाँ से थी, तो इसके लिए एक काउंसलर भी स्पेशली बुलाया गया था, जिसने बहुत ही अच्छे से बात करके काफ़ी जो अहम पहलू थे वो निकाले। मेडिकल के आधार पे इसमें कायमी की गई और कायमी के बाद एक एसआईटी गठित की गई। आसपास शहर के जितने भी टेक्निकल साक्ष्य हम लोग संकलित कर सके थे वो हमने किए, जिसके आधार पे प्रमुख तौर पे एक ऑटो चालक को अभिरक्षा में लिया गया। उससे जब पूछताछ हुई, पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए, जिसमें प्रमुख तौर पे जो बैक सीट है उसमें कुछ ब्लड स्टेन्स पाए गए और पूछताछ के दौरान उसने बताया कि घटना दिनांक को, घटना समय पे वो जो फरियादिया है या जो बच्ची है उसके साथ वो था। इसके बाद भी बाकी भी उसको बैक ट्रैक हम लोगों ने किया और अभी तक की जानकारी में ये पता लग गया है कि बच्ची कहाँ की है और बच्ची सतना की है और वहाँ पे एक कायमी थी जो कम्युनिकेट की गई है। इसमें जो उसकी गुम होने की तारीख है वो घटना से सिर्फ एक दिन पहले की है, तो इसमें जो लगभग टेक्निकल और जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं सब एकत्रित हो गए हैं और जल्दी इसमें बाकी खुलासे भी किए जाएंगे। सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए, जिसने भी किया है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उज्जैन में एक 12 साल की लड़की के साथ बर्बरता से रेप करा गया। लड़की निर्वस्त्र अवस्था में 8 किलोमीटर तक 2.5 घंटे तक पैदल घर घर जाकर लोगों से मदद मांगती रही, लहू बहता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं करी। यहां तक कि जब वो बेहोश हो गई तब जाके किसी ने उसको देखा और पुलिस को कॉल करी गई और एफआईआर दर्ज करी गई, पर अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। तो 2 बातें हैं। सबसे पहले तो जो भी दोषी हैं उनको तुरंत अरेस्ट करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश को तुरंत उनको अरेस्ट करना चाहिए, मध्य प्रदेश पुलिस को, और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। और दूसरी बात, ये कौन लोग हैं जिनका दिल में बिल्कुल दया नहीं आई जब एक अर्धनग्न लड़की घर घर जाकर लहू लुहान होकर छोटी बच्ची 12 साल की बच्ची भीख मांगती रही मदद की और उन्होंने कोई मदद नहीं करी। तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? किस तरीके का देश हम बना रहे हैं, कितनी असंवेदनशीलता होती जा रही है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले न जाने कितने वर्षों से यहां पर राज किया है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है? क्या मध्य प्रदेश में खुशहाली आ गई है? या सबसे ज्यादा परेशानी में अगर कोई है तो हमारी माताएं बहनें हैं। देश के आंकड़ों में अगर हम मध्य प्रदेश का स्थान देखें तो सबसे आगे दिखाई देता है मध्य प्रदेश, कि जहां सबसे ज्यादा माताओं, बहनों, बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, कि लोकसभा में और राज्यसभा में केवल देश की जनता को धोखा देने के लिए और खासकर माताओं बहनों को धोखा देने के लिए बिल लेकर के आए। Well, let's hope that good sense prevails, and it is incumbent on the authorities, especially the police department, to make sure that all the culprits, the perpetrators, are brought to justice as soon as possible. Shifting our focus here, ladies and gentlemen, bringing in some international news for all of you to consume. In another revelation, the son of prominent Sikh community leader Hardeep Singh Nijjar, he has disclosed that his father maintained regular contact with the Canadian intelligence officers, especially in the months leading up to his killing in British Columbia in June this year. Prime Minister Justin Trudeau, he had informed the House of Commons about this case, which he says is quote-unquote credibly linked to India. India has denied the quote-unquote absurd claims, calling for more evidence to be put out. Now, Balraj Singh Nijjar, 21 years old, the son of Hardeep Singh Nijjar, shared that his father had been engaging with officers from the Canadian Security Intelligence Services, the CSIS, meeting them once or twice a week. Additionally, Balraj Singh Nijjar also revealed that he himself attended a meeting between his father and the Royal Canadian Mounted Police in the previous year, during which they were made aware of threats against Hardeep Singh Nijjar's life. As a precautionary measure, he was advised to, well, stay at home.
No, not in that meeting. It was that was not a bilateral meeting. It was a meeting of a number of countries, and it did not come up in that meeting. But we have engaged with our Indian counterparts on this issue and urged them to fully cooperate with the Canadian investigation. I don't want to preview the conversations he will have in that meeting, but as we've made clear, we've raised this. We have engaged with our Indian counterparts on this and encouraged them to cooperate with the Canadian investigation, and we continue to encourage them to cooperate. The engagement you had with the Indians, do you see sense of cooperation from them? I'm not going to read it. I'm not going to speak to our private conversations. एसजीपीसी ने तो अपनी अंतर कमेटी में बता दिया है कि एक देश का प्रधानमंत्री अपनी पार्लियामेंट में अपने सभी जो साथी हैं और उसके जो ऑपोजिशन है उनके साथ में बैठ के जो बात कहे उसका अर्थ बड़ा डूंघाई पर होता है। उस बात के लिए काफी चिंता है। और दूसरी बात जो बात सामने आ रही है, हर रोज नई सवेर जो इन्वेस्टिगेशन का जो उसका निशाना है, वो जो एजेंसी वाली बात की है हिंदुस्तान में उसके साथ आ रहा है। और देखो कितनी बड़ी बात है कि हम तो ये कह रहे थे कि अमेरिका उनके साथ नहीं है, फलाना उनके साथ नहीं है, और आज देख रहे हैं कि जो अमेरिका के एंटनी ब्लिंकन है, जो एंटनी ब्लिंकन, उनका भी बयान आया है। उन्होंने बोला है कि ये सभी जांच जो है, जो मिस्टर ट्रूडो ने बोला है, ये काफी बात गंभीर है, और उसने बोला कि हिंदुस्तान को इस जांच में वो सहयोग करें। Anthony Blinken, Jake Sullivan, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, the India-Canada standoff. We'll bring you all the latest updates. Meanwhile, take a look at this one. Canadian Prime Minister Justin Trudeau, he has come out and issued a formal apology following a controversial incident in the House of Commons involving the Speaker of the House, Anthony Rota, who praised a Nazi veteran, Yaroslav Hunka, whilst the Ukrainian President Volodymyr Zelensky was present. Now, Trudeau expressed deep regret and revealed that Ottawa had initiated diplomatic channels to apologize to Kiev and President Zelensky. Trudeau emphasized the gravity of the situation for stating that for all of us who were present to have unknowingly recognized this individual was in fact a terrible mistake and a violation of the memory of those who suffered grievously at the hands of the Nazi regime. However, the official opposition, Conservatives, they argue that Trudeau bears ultimate responsibility as he had invited President Zelensky to address the Canadian Parliament, and they accuse him of negligence. Anthony Rota, who openly acknowledged Yaroslav Hunka as a hero during a session last Friday, resigned from his position as Speaker of the Chamber on Tuesday, taking full responsibility for the incident. Hunka, aged 98, was a Polish-born Ukrainian who had served in one of Adolf Hitler's Waffen SS units during World War II before immigrating to Canada. Shifting our focus here. A video showing a man assaulting a woman from Nagaland in Gujarat's Ahmedabad has gone viral. In the video that you can see on your screens, the woman is dragged by the hair and her clothes were ripped. The police said they have verified the contents of the video, which appears to have been shot outside a spa. They said the victim is being counseled by the lady cops and that she is, yet to file a formal police complaint. The 4-minute-long video shows a man, apparently the owner of the spa, and the woman who works there as a masseuse having a heated argument. ये जो 25 तारीख की जो हुआ, तो उसके लिए हम लोग मोहसिन और हम दोनों की पार्टनरशिप में था, तो हमने सैलून खोला था इस पार्टनरशिप में, एक लेडीज सैलून। तो उसमें उसकी वजह से हमारी थोड़ा लड़ाई हुई थी बीच में। तो हमने जैसे थोड़ा लॉस हुआ था 4,000-5,000 जैसे, तो उसमें मैंने एक लड़की को डांट दिया था, तो उसको बहुत गुस्सा आ गया। फिर मुझे बोला कि क्यों डांट रहा है, तो मैंने बोला कि तुम्हारी क्या रिलेशन है उसके साथ जो इतना गुस्सा आ रहा है, तो उसने सीधा मारने लग गया मुझे।
तो मैंने बोला भी था कि हाथ मत चलाओ, मत मारो मुझे, शांति से बात करो, तो भी वो मारती जा रहा है। फिर मैंने 100 नंबर पर कॉल करने के लिए फ़ोन उठा के डायल किया, तो उसने फ़ोन छीन लिया मेरे से। फिर मेरा बैटरी भी कम था तो फ़ोन ऑफ हो गया। फिर वो मुझे मार रहा था, फिर मैं भागते भागते अपने को भाग गया मैं रास्ते पे। फिर वो माफ़ी मांग ली थी मेरे से, फिर मैं पुलिस स्टेशन गई नहीं, उसने मेरे से माफ़ी मांगी थी तो मैंने माफ़ भी कर दिया था। फिर मैं पुलिस स्टेशन तो गई नहीं, पर जब ये वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस वाले को पता चला कि सुबह से मेरे पे कॉल आ रहा है कि फिर भी मैं आज भी नहीं करना चाहता था FIR, मैं आज भी उसके ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहता हूँ। पर सबने मुझे समझाया कि पुलिस वाले ने सबने मुझे बोला कि ऐसा तो अगर आपके साथ आज हुआ कई और दिन दूसरे के साथ होना नहीं चाहिए, तो सबने सपोर्ट किया मुझे। फिर उसके बाद मैंने ये वो किया और अभी तक जो सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं सबको थैंक यू। सबको सब अच्छा भी लग रहा है मुझे कि कोई तो है हमारे सपोर्ट करने वाली। हम भले नॉर्थ ईस्ट हो तो भी हमको सपोर्ट करने वाले हमारे पीछे पुलिस वाली खड़ी है, मीडिया खड़ी है, सब खड़ी है, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है वो चीज़। News coming in from Uttar Pradesh next, ladies and gentlemen, shifting our focus to that. The Uttar Pradesh Police Special Task Force on Thursday arrested an aide of slain gangster turned politician Atiq Ahmed in the national capital. Abdul Samad, also known as Saddam, was arrested in relation to the killing of Umesh Pal in February. That particular visual that you're seeing, the attack that took place on Umesh Pal, the country bomb that was hurled, and the firing that ensued soon after. That's the lawyer Umesh Pal, who was shot in broad daylight, ladies and gentlemen. Now, Saddam is a co-accused along with Atiq Ahmed in the FIR registered by the police in the Umesh Pal murder case. Saddam had apparently fled to Dubai after the murder and returned to India after a few months. As per the police, he had been hiding in Karnataka and in Mumbai under false names. The arrest was carried out as Saddam was on his way to meet his girlfriend in Delhi's Malviya Nagar area. Saddam was involved in several other criminal activities like those of murder, extortion, illegal mining and robbery as well. He had been carrying a bounty of rupees 1 lakh on his head. अब्दुल समद और सद्दाम ये अशरफ का साला है, पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र प्रयागराज का रहने वाला है। जब अशरफ बरेली जेल में बंद था तो ये बरेली में रहकर सारा कार्य अशरफ का देखता था, सारा मैनेजमेंट देखता था, बाहर जमीन की खरीद बिक्री भी देखता था। और इसने सभी शूटर्स को ले जाकर बरेली जेल में फेक डॉक्यूमेंट्स पर अशरफ से मिलवाया था। ये शूटर्स लगभग 2.5 घंटे तक बरेली जेल में रहे थे। घटना हो जाने के बाद इसका खुलासा सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के दौरान हुआ था। जब ये सारी बातें प्रकाश में आई, इस प्रकरण में बरेली में एक मुकदमा भी कायम है और इसी मुकदमे के तहत इसे गिरफ्तार किया गया है। Well, moving on, various farmers' groups in Punjab have initiated a 3-day Rail Roko, a railway blockade protest, highlighting their pressing demands. These demands encompass a financial package to offset recent flood-induced losses, legal assurance for a minimum support price, and debt relief. As the protest unfolds, it's already causing significant disruptions with approximately 25 trains cancelled on the first day alone so far. The farmers are resolute, vowing to continue their agitation against the central government until the 30th of September. Their planned demonstrations span across various districts including Moga, Hoshiarpur, Gurdaspur, Jalandhar, Tarantaran, Sangrur, Patiala, Firozpur, Bhatinda and Amritsar. And in Amritsar, protesters have commandeered the Amritsar-Delhi railway track in Devadaspura, visuals that you can see. One of their key demands is a substantial 50,000 crore rupee flood relief package for the northern Indian states, aligning with the recommendations of the Swaminathan Commission report. Additionally, the farmers are adamant about a complete waiver of all farmers' and laborers' debts. They're also seeking
a rupees 10 lakh compensation and government employment for the families of the farmers who tragically lost their lives during the protest against the now repealed 3 farm laws. Their Rail Roko protest is a manifestation of the farmers' commitment to secure their rights and livelihoods, according to one of the spokesperson of the farmers' union. Farmers in Punjab's Amritsar, led by Kisan Mazdoor Sangharsh Committee, had announced a Rail Roko protest against the central government and added that farmers from Haryana too would extend their support. The decision was announced by Sarwan Singh Pandher, the Kisan Mazdoor Sangharsh Committee General Secretary, following a meeting of representatives of 19 farmers' bodies. देखिए, पहले आपको अभी चल क्या रहा है पंजाब में, आपको ग्राउंड जीरो पर तस्वीरें दिखा देता हूं। जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रेलवे लाइन है। जालंधर से आगे जम्मू की ओर और जालंधर से अमृतसर की ओर दिल्ली अगर आप आ रहे हैं तो मेन ये मुख्य लाइन है, रेलवे लाइन, जिसके ऊपर इस वक्त देखिए आप किसान ने धरना लगा दिया है। और पूरे पंजाब में जगह जगह पर करीब 12 से 16 ऐसी जगह है जहां पर किसान इस वक्त रेलवे ट्रैक्स पर पहुंच गए हैं। रेलवे ट्रैक पर इसी तरह से किसान बैठ गए हैं, दरियां बिछा दी गई हैं। और जो मांगों की आप बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी मांग यह है कि बाढ़ राहत पैकेज जारी करे केंद्र सरकार। 50,000 करोड़ रुपए का पैकेज मांगा जा रहा है। उनका कहना है कि बाढ़ आई उत्तर भारत में, खासतौर पर पंजाब में काफ़ी नुकसान हुआ है, तो इस नुकसान की भरपाई करने के लिए किसान मजबूर हैं। उनको 50,000 करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया जाए। तमाम जो किसान है वो यहाँ पर बैठ गए हैं। अब क्या, अब 3 दिन ऐसे ही बैठे रहेंगे जी यहीं रेलवे ट्रैक पर? यहीं रहेंगे जी 3 दिन, दिन रात धरना लगेगा? दिन रात इधर ही धरना लगेगा। तो अब लोग जो परेशान हो रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि किसानों के साथ खड़े हों? क्या उनके लिए क्या संदेश है? जो लोग प्रभावित हो रहे हैं ट्रेन के लिए, तो वो भी लोग हमारे साथ में है ना, उनमें से हम है ना, हम भी उनमें से ही हैं। तो मुख्य मांगे एक बार बताएं जल्दी से, क्या क्या मांगे हैं जिनको लेकर आप यहाँ आ गए हैं, गर्मी में धूप में बैठे हैं? प्रधान साहब, क्या मुख्य मांगे हैं जिनको लेकर यहाँ आकर बैठ गए रेलवे ट्रैक पे? मुख्य मांगे एक तो है ना, जो हड़्ह प्रभावित इलाके के लिए जो राहत पैकेज चाहिए। दूसरा जो MSP ग्रांटेड कानून जो दिल्ली धरना लगा उस टाइम मन गए सी, वो मनिया हुई मंगा भी लागू नहीं हो रही। इधर दे बहुत सारिया मंगा है। तो दिन रात यहीं बैठेंगे, यहीं खाना लंगर सब यहीं चलेगा? इत्थे चलेगा, आपके लिए भी चलेगा। जी जी। When our Lok Sabha Member of Parliament Ramesh Bidhuri and his jibes and remarks against Danish Ali, that is something that people are talking about. But take a look at this one, because the Congress party is now saying that this is maybe a reward for what he had said in the parliament. The Bharatiya Janata Party has assigned Lok Sabha MP Ramesh Bidhuri as the election in charge for Rajasthan's Tonk district. This appointment comes shortly after Bidhuri made those controversial remarks targeting a Muslim legislator in the parliament during a debate. Opposition leaders have said giving responsibility of the election in charge amid the storm over his comments on Danish Ali only shows Bidhuri is being rewarded for his action. How does show-caused person be given a new role by the BJP? Now, with the Gurjar community present in large numbers in the district, which has 4 assembly seats, including the one held by senior Congress leader Sachin Pilot, the BJP believes Bidhuri can help it swing the votes, as he is also from the same caste. Meanwhile, Lok Sabha Speaker Om Birla has referred the complaint registered by BSP MP Danish Ali against Ramesh Bidhuri to the Privileges Committee. Danish Ali had raised an official complaint against the BJP Member of Parliament for using unparliamentary language against him during a debate in the Lok Sabha. चाल, चरित्र और चेहरा सामने आ गया है कि किस तरीके के लोगों को ये ट्रेंड करते हैं। जो नफरत फैलाने का काम बाहर करते थे वो अंदर संसद में नफरत फैलाने का काम किया, हेट स्पीच किया। और अब बीजेपी उनको जो है, एक तरफ तो कारण बताओ नोटिस जारी कर रही थी उस दिन, अब जो है उनको काम पे लगाया जा रहा है। तो सभ्य समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। देयर इज ए लिमिट फॉर ऑल दीज थिंग्स। हमारा देश, हमारा के संस्कार ऐसे नहीं है। जो बाबा साहब का संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं वो ऐसे नहीं है, जो इस देश के लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले। तो बीजेपी को अगर ऐसा सोच रही है कि वो रमेश बिधूड़ी को
इस्तेमाल करके कुछ फायदा उठा लेगी, तो मैं समझता हूं कि दे आर इन अ फूल्स पैराडाइज. Well, it's like this, that the BJP always stands by all those who commit offenses, some serious, some not so serious. And if this were said, if what Bidhuri said in Parliament was said by any other member of the opposition, he would have been immediately expelled from Parliament. Well, he would have been suspended, notice would have been issued, and given the kind of language he used, this would call for his expulsion. But of course, they always reward those who do these things because first they allow them to do it. Then the defense minister apparently made a statement that he should not have done it, and then he's rewarded. He's sent to Tonk, and the reason why he's sent to Tonk is because Tonk has 29.25% population of Muslims and 69% odd population of Hindus. So they want to again polarize the polity. So they make somebody or use somebody's statement, then use it for political purposes and reward him. And the message to the public is they don't really care, because what they want is message to the electorate. Moving on to news from Kerala, ladies and gentlemen, where the governor, Arif Muhammad Khan, has slammed the state for spending 40 lakhs for seeking legal advice for row over bills that are still kept waiting with the governor. He said that the state government paid 40 lakhs to a senior lawyer in Delhi at a time when state is passing through a severe financial crisis. Chief Minister Pinarayi Vijayan on Wednesday had slammed Governor Arif Muhammad Khan for refusing to sign the bills passed by the State Assembly. There are 8 bills pending with the governor, and 3 of them have been lying there for 1 year and 10 months. Meanwhile, the Kerala governor said that he will not succumb to the threats made by the Chief Minister and said, and I quote, "I welcome the government's plan to move the apex court," because that's what the government is now going to do. Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan has said that because the governor is sitting on those 8 bills, we will have to move the Supreme Court. They have any confusion in their mind, then it will be cleared. Who has informed you? That is a different thing. Going to the Supreme Court, has he announced it? Where? Where? In Trivandrum? It's very good if that is the position. If they have some confusion in their mind, there was some confusion in the mind of the Telangana government, that was cleared. If they have some confusion, it will also be cleared. Well, now, next up, ladies and gentlemen, shifting our focus to India's contingent that's ever so bright and shining at the Asian Games. Indian athletes, they're continuing their amazing performance at the Asian Games 2023 in Hangzhou, China. The team of Sarabjot Singh, Arjun Singh Chima and Shiva Narwal started the day by winning another gold in men's 10-meter air pistol team event. A historic medal was won by Wushu as Roshibina Devi clinched the silver medal in the women's 60 kilogram category. Now, this is India's first silver medal in Wushu after a gap of 13 years, let me tell you. In the equestrian dressage individual intermediate 1 freestyle event, India's Anush Agarwal secured the bronze medal. Meanwhile, the women's squash team defeated Malaysia 3-0 to enter the semi-finals and have been assured of a medal. India's medal tally has now risen to 25 with 6 gold medals, 8 silver medals and 11 bronze medals. To be honest, the feeling of the gold has still not sunk in, and especially of the bronze. It just feels so unreal. You know, this is all what I've wanted. This is all what I've always visualized. This is all what I've always hoped for. You know, this has not come overnight. I've worked hard for years. You know, I shifted to Germany already in 2017, 6 years ago, and it is due to the sacrifices of my coaches, of my coach Mr. Huber Schmidt, of my family, of everyone who has supported me. गोल तो नहीं जीत पाया देश के लिए, पर इसलिए जैसे हम चाहते हैं नहीं पहुंच पाया, जैसे सर लोग चाहता है, इसलिए थोड़ा सा दुखी भी है, पर हाँ ये जीत पाया, पर इसलिए भी ठीक है। हम हाँ फर्स्ट राउंड तो वो जीत गया था, पर सेकेंड राउंड में हम
पूरा कोशिश किया मतलब हम पूरा जीतेगा, क्योंकि बेस्ट ऑफ 3 होता है हम लोग का, पर हमने पूरा कोशिश किया है पर भी नहीं हो पाया। गेम में तो हारना जीतना तो होता ही है, पर भी हम जो मेरा गलती है इस बार अच्छा से सुधार के नेक्स्ट टाइम हम अच्छा से कमबैक करेंगे, ऐसे सोचा है। जो 41 वर्ष में नहीं हो पाया वो इक्वेस्टेरियन में ड्रेसाज की हमारी टीम ने किया है। मैं इस मंच से उनको भी बहुत बहुत बधाई गोल्ड मेडल जीतने के लिए करता हूं। वुमेन क्रिकेट टीम, महिलाओं की क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने का कार्य भी किया। मैं इसके लिए आपको बहुत बधाई, गोल्ड मेडल जीता है सारी टीम को। And on that happy note, we're going to wrap this edition of Top Stories, ladies and gentlemen. Many thanks for joining with us. We're going to see you again same time. Meanwhile, lots more coming right on the other side. Don't go anywhere. Keep watching News 9 Live. Mr. Murthy, 25% of our population is below the age of 15. How do we make them involved in this growth story? The leadership at all levels, in the country,